let us discuss let us discuss let us discuss discuss the region of bisectors, bisectors of two intersecting lines, suppose that the two lines L1 and L2 which are intersecting lines, has two bisectors B1 and B2, two bisectors B1 and B2. मान लीजिए कि ये आपका L1 है and this is L2, here is arrow and this one is, and here is L1 and L2. तो इस तरह से अगर दो लाइन दिया गया है L1 and L2, तो we get two bisectors B1 and B2. and here notice that कि एक बाइसेक्टर आपको ये मिलेगा and say it B1 and here this angle is equal to this angle, and another bisector you will get is this one and say it B2. ये दो बाइसेक्टर होते हैं and here this angle is equal to this angle. तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है डिस्कशन का कि रीजन्स ऑफ बाइसेक्टर्स. तो रीजन्स ऑफ बाइसेक्टर इज कुछ नहीं होता है, जैसे कि अगर B1 है तो B1 का जो रीजन होगा वो ये सब सारे रीजन्स हो जाएंगे. ये ऑल स्पेसेस हियर आर कॉल्ड रीजन्स ऑफ बाइसेक्टर B1 एंड सिमिलरली इन हियर आल्सो ये जो होगा ये सभी B1 का रीजन कहलाएंगे, रीजन्स ऑफ बाइसेक्टर B1. और इस तरह से और ये जो B2 बाइसेक्टर है इसका रीजन ये वाला पार्ट कहलाएगा हियर. दिस पार्ट ऑफ दिस प्लेन आर कॉल्ड रीजन्स ऑफ बाइसेक्टर्स B2 एंड सिमिलरली ये नीचे भी जो पार्ट है ये भी इसका B2 का रीजन कहलाएगा. तो यहाँ पे इस डिस्कशन के पीछे एक टॉपिक है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट P दिया गया है अल्फा बीटा, तो हम कहेंगे इन मैथमेटिकल लैंग्वेज वी से दैट कि बाइसेक्टर B1 contains the point P alpha beta. मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट आपको दिया गया है Q गामा एंड डेल्टा. तो हियर अगेन इस बात को हम टेक्निकली इन मैथमेटिकल लैंग्वेज कहते हैं कि बाइसेक्टर B2 contains the point Q गामा कॉमा डेल्टा. अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर P अल्फा बीटा है, यहीं पे अगर कोई पॉइंट अगर ओरिजिन है, मान लीजिए कि इसको O कह देते हैं, ओरिजिन 0,0. तो ये जो ओरिजिन है ये कौन बाइसेक्टर कंटेन करेगा? तो बाइसेक्टर B1 कंटेन्स द ओरिजिन. हियर वन मोर एग्जांपल, हियर बाइसेक्टर B1 contains origin O, that is 0,0 and so on. Let us discuss a subtopic of straight lines. A straight line. ये जो सब टॉपिक है,
to determine whether acute angle bisector contains origin or obtuse angle bisector contains origin फुल स्टॉप। ये हमारा सब टॉपिक है, इसी का डिस्कस करना है। नोटिस दैट वी गेट bisectors of only intersecting lines. So let a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 are two intersecting lines. Interline. Say now for intersecting lines, slope of this must not be equal to slope of this, that is minus a1 by b1 is not equal to minus a2 by b2, which implies a1 by b1 is not equal to a2 by b2. Now write these two equations in such a way that C1 and C2 both are positive. So if C1 comma C2 are positive, then we can write C1 is equal to minus a1x minus b1y and C2 it can be written as minus a2x minus b2y. If C1, C2 are not positive, then multiply throughout the equation by minus sign and make C1 and C2 positive. Now, after this, convert these two equations in normal form by just dividing this equation by a square root of minus a1 square plus minus b1 square and this equation by a square root of minus a2 square plus minus b2 square. That is, we write this into normal form. So here C1 by we write a square root of minus a1 square plus minus b1 square is equal to minus a1 by a square root of minus a1 square plus minus b1 square into x or plus minus b1 upon a square root of minus a1 square or plus minus b1 square. Sorry, here a square. And the second equation, and here C2 divided by a square root of minus a2 square
plus minus b2 whole square is equal to minus a2 divided by this much quantity, that is minus a2 square plus minus b2 square into x plus minus b2 divided by a square root of minus a2 square plus minus b2 square into y. Here the first equation can be written as c1 by a square root of a1 square plus b1 square, because minus a1 square is equal to a1 square and minus b1 whole square is equal to b1 square is equal to minus a1 upon again the same thing a1 square plus b1 square into x plus minus b1 upon a square root of a1 square plus b1 square into y. And the second equation is c2 upon a square root of a2 square plus b2 square is equal to minus a2 upon a square root of a2 square plus b2 square into x plus minus b2 divided by a square root of a2 square plus b2 square into y. If I take this quantity as cos alpha, then this quantity becomes sin alpha. This becomes sin alpha. If this quantity is taken to be cos beta, then this quantity becomes sin beta by trigonometry. So, and this can be taken as P1 and this can be taken as P2. So these two equations can be written as by taking this one as cos alpha and this one as cos beta. So this one becomes sin alpha and this one is sin beta. So when minus a1 upon a square root of a1 square plus b1 square is equal to cos alpha, which implies sin alpha is equal to minus b1 upon a square root of a1 square plus b1 square. And when minus a2 upon a square root of a2 square plus b2 square is equal to cos beta, this implies sin beta is equal to minus of b2 upon a square root of a2 square plus b2 square. So the above equation reduces into normal form, and we can write x cos alpha plus y sin beta is equal alpha is equal to P1 where P1 is equal to C1 upon a square root of A1 square plus B1 square. And the second equation reduces to x cos of beta plus y sin of beta is equal to P2 where P2 is equal to C2 upon a square root of A1 A2 square plus B2 square. Now come to the graphical part of this topic. Here is y-axis and here is x-axis. This is x-axis and this is origin and this is y-axis, and here is x dash and here is y dash. Suppose here is the line a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and here is another line that is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Here is arrow, here is arrow, here is arrow. Now we can say this line by L1 and here is L2 and the second line. Now draw the perpendicular from origin to this line. Origin here is 90 degree, this one is also 90 degree.
and produce this line here. Now draw perpendicular. Say it, here is origin and this point of intersection is P, and here is M, and this point is N. This is also 90 degree. Here is this one is P1 and here is P2. According to question, this angle will be alpha, and this angle will be beta. This angle will be beta. So angle between these two lines, these two normals, will be बीटा माइनस अल्फा. ध्यान से देखेंगे कि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, और ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये क्वाड्रिलेटरल है, और जिसके एक अपोजिट जो एंगल्स है वो 180 डिग्री बना रहे हैं. दिस इज 90 डिग्री. सो हियर OMPN ये क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सो हियर quadrilateral OMPN is a cyclic quadrilateral. as जैसा कि sum of these and these angles, angle M plus angle N is equal to 180 degree. Now, if I take cosine of this angle beta minus alpha, then here cos of beta minus alpha can be written as what? Cos beta cos alpha प्लस माइनस है तो प्लस होता है साइन बीटा एंड साइन अल्फा. अगर इसका वैल्यू हम पुट करें, इफ आई पुट ऑल दिस वैल्यूज हियर, तो वी कैन राइट हियर कॉस बीटा इज नथिंग बट माइनस a2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और इंटू कॉस अल्फा इज नथिंग बट माइनस a1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस साइन बीटा इज नथिंग बट माइनस b2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इंटू माइनस साइन अल्फा इज नथिंग बट माइनस b1 अपॉन square root of a1 square plus b1 square. So minus minus plus, again minus into minus plus, so this becomes और दोनों का denominator same है, तो so this becomes a1 a2 plus b1 b2 and whole divided by square root of a1 square plus b1 square into square root of a1 square plus a2 square plus b2 square. Notice that if a1 here, this is a positive square root and this is also a positive square root, so their product must be positive. So इसका वैल्यू जो है value of cosine of beta minus alpha depends upon the value of a1 a2 plus b1 b2. There may be two cases. Case first, when cos of when a1 a2 plus b1 b2 is positive. It means कि अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ओवरऑल दिस क्वांटिटी बिकम्स पॉजिटिव, दैट इज व्हिच इम्प्लाइज कोसाइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा इज पॉजिटिव, व्हिच इम्प्लाइज बीटा माइनस अल्फा इज एन acute angle and which implies the angle P must be an obtuse angle. So bisector of this angle contains origin.
So which implies bisector of obtuse angle contains origin, full stop. Now case 2, when a1 a2 plus b1 b2 is less than 0, which implies cosine of, अगर ये नेगेटिव हुआ तो cosine of बीटा माइनस अल्फा इज लेस देन 0, ये वैल्यू नेगेटिव होगा. दिस इम्प्लाइज ये बीटा माइनस अल्फा जो एंगल होगा इज एन ऑब्ट्यूज्ड एंगल, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री. इट मीन्स कि एंगल P जो होगा, एंगल P इज एन एक्यूट एंगल. इट मीन्स कि ये जो बाइसेक्टर होगा, ये जो बाइसेक्टर P का जो बाइसेक्टर यहाँ से जो ड्रॉ किया गया है, ये होगा, ये दिस बाइसेक्टर कंटेन्स ओरिजिन. तो विच इम्प्लाइज acute angle, this implies bisector of the given bisector. यहाँ पे इसका अगर नाम हम B1 कर दें तो bisector B1 which is acute angle bisector contains, bisector B1 contains origin. इस तरह से हम डिटरमिन करते हैं कि कौन सा एंगल बाइसेक्टर एक्यूट या ऑब्ट्यूज्ड ओरिजिन को कंटेन कर रहा है.